मतलब मैं बोलना चाहूँगी कि आप ना फिल्म में बहुत क्यूट बुड्ढे लगे। अब मिलेंगे आज इसके बाद वही कॉम्प्लीमेंट मुझे देना था कि मुझे पूरी फिल्म में एक बहुत ही अच्छे लगे, क्यूट बुड्ढे एकदम। थैंक यू। इसका कैसे बनेगा यार? तुम भी यार मुंह खोलते हो तो फिर ऐसी बातें करते हो। रियली आई टेल यू, कैसे बनेगा यार? कैसे बनेगा यार? तुम भी यार मुंह खोलते हो तो फिर ऐसी बातें करते हो। रियली आई टेल यू, कैसे बनेगा यार? Amish, one criticism that both Chintu and me have had from the media is that your Gujarati accent was not correct. The only accent that was good and correct was of Jimit. So Jimit, thank you so much. तू बड़ी कभी पंजाबी पिक्चर में काम करके देख। Yeah. So I want to ask, how many Gujaratis here today? Raise your hand. Okay, ma'am, can you, आप कुछ हमसे बात कर सकती हैं? अच्छा, कुछ भी बात कीजिए ऐसे ही। कैसी लगी आपको फिल्म? अच्छी लगी आपको? She has written additional dialogues. She is Digna. She is Soumya's wife, and she has written additional dialogues. इधर कौन था यहाँ पर? नहीं, ये सब आप गुजराती हैं? अच्छा, उनको क्यों पॉइंट कर रही हैं आप? अच्छा, आप पूछ सकते हैं सर कुछ। सर, आपने फिल्म देखी हमारी और कुछ कहना चाहेंगे उसके बारे में? It was not as caricaturist as it is in other films that we've seen in Hindi films. हिंदी में बात करेंगे आप? इतना the accent इतना funny नहीं था जितना दूसरे हिंदी फिल्म्स में ट्राई करते हैं. I think बहुत it was very close to how my parents would. शांत देवियों सज्जनों, 3 मिनट से ये अंग्रेजी और गुजराती होने के बावजूद हिंदी में बात करें, कहीं एक्सेंट पकड़ा आपने इनका? नहीं ना? तो फिर हम पे ऊपर आप क्यों चढ़ गए? You know, sometimes, you know, it's expected that just because you're playing a particular character from a particular state or a particular region, it is expected that you will have that accent. But in normal life, Gujaratis speak very normally. And फिल्म में कई एक जगह पर जहाँ पर हमें लगा कि एक दिखाना है कि हाँ गुजराती है, वो हमने किया। जैसे कि जूते नहीं पहने घर के अंदर, जैसे कि अंग्रेजी शब्द जो हैं, तो अगर उसको कहना है कि मुझे इसका रिकॉर्ड तोड़ना है तो उन्होंने कहा मुझे इसका रिकॉर्ड तोड़ना है, तो रिकॉर्ड को रिकॉर्ड। कई एक जगह ऐसी थी जहाँ पर ये शब्द आया और हैं प्रॉपर्टी इंस्टेड ऑफ प्रॉपर्टी। तो ये चीज़ें छोटी छोटी थी और ये जानबूझ के रखी गई, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि हमारी फिल्में जो हैं वो पैन इंडिया है और सबको समझना चाहिए कि क्या हो रहा है। अगर इतना ज़ोरदार एक्सेंट अगर हम डाल देंगे ये बताने के लिए कि हम गुजराती हैं, तो हो सकता है कि अलग प्रांतों के जो लोग हैं वो शायद उसे ठीक तरह से समझ ना पाए, इसलिए थोड़ा उसको कम रखा था जानबूझ करके। और ये उमेश जी का एक आदेश भी था, उमेश का आदेश, वाह क्या बात है, कि उन्होंने कहा कि मैं नहीं चाहता कि आप इसको make it a typical Gujarati caricatured character. He wanted it to be pretty normal. Yes, the odd sentences or the odd word which has a Gujarati twang or a suggestion of being a Gujarati, that's all that he wanted. Jimit, he did not stop. Because Jimit is a superstar in Gujarat, and if he hadn't done what he was asked to do, he would have got a pasting. नहीं, और फिल्म में ये भी दिखाया गया कि मैं गुजरात से ही आता हूँ। तो तो हम लोग किधर से आए फिर? आप मुंबई में पहले से बेस्ड हैं और मैं ठेठ गुजरात से आया हूँ, तो इस वजह से। और दूसरा एक ये भी था कि ज़्यादा कैरिकेचरिस्ट जो आप लोग जो टीवी में और दूसरी फिल्मों में देखते हैं, वो ऐसे हम लोग गुजरातीज भी ऐसे बात नहीं करते हैं। वो ऐसा करते हैं ना, ऐसा हम लोग कभी उस तरह से गुजराती में बोलते नहीं हैं। तो वो भी एक कंसर्न था कि ऐसा लाउड और ऐसा नहीं करना था। Some of the comments from well-wishers came that the film was it was constricted to just one room, and as you know, in today's times, everything is so fantasized, so larger than life, huge production values. They felt, don't you think it was wrong not to have gone out of this one house
that both of us were living in. But I really don't have an argument for that. I think Umeshji deliberately wanted the house to be middle class and restricted to the home, because everything that happens in the film is contained within those four walls. Yes, there were opportunities when we went out, so those were beyond any kind of grand exploitation. I think if we had added, a lot of glamour and grandness to the film, as Soumyaji was saying, the crux of the story would have been destroyed, because it was more personal reactions, interactions between a father and son and their relationship. So I don't know what you feel. We'll talk to you about that later, but this is something that came up. If I may add, there's been criticism saying that the film looks and starts off like a play, because it's based on a play. My father made a film called Sangam. The playing time was 4.5 hours, and there were only 3 characters in the film. There was no 4th character. No one said there that was looking like a play or a stage play. Because it's made on a play, that's why you say it looks like a play. So I think that's one criticism which is uncalled for. Sir, Bachchan sir and Rishi sir, you heard Justin towards your left from PTI. Yeah. Both of you have had massive success in your career of lasting several decades. Is there still somewhere in the back of your head the fear of failure when a film comes out? Or perhaps it's essential for a star to let go of the fear eventually? No, it's always a fear. And from the day, much before it is released, that's all we talk about. What is going to happen? How many theatres? How much do we expect? Are they going to like it? Not going to like it? Komal Nahata is laughing because he knows that his verdict is the first one that we read and we make an opinion. Yaar, Komal Nahata ne isko flop bol diya, gaye kaam se. So yes, it's always a worry for us. And even now, just before we came hiding behind the screen, Chintu and me were just talking about, what is the collection, what is going to happen in the days to come. 7% drop, what does that mean? I met Amir yesterday. Amir came to see me yesterday for some other matter. And he had a peculiar, a financial reading about film. He said, your first week collection, so your first weekend collection, that is 3 days, if it is, say, 10 crores, if you multiply it by 3, that is an estimate of where your film will eventually go. I don't know if that's correct. And if it is, if it sustains in the remaining days, then you multiply by 5. Am I right? Komal, you're a genius. Really? So that's what he said. So if that is the assumption that we take mathematically, I don't know all this. So then I think that we are on good ground. What do you feel, Chintu? You're very good. No, this is news to me. I didn't know. Yeah. ये theory नहीं होनी थी मेरे को. Yeah. कोई ऐसा रिएक्शन जो आपको लगता है कि कोई शेयर करना है कि Yes. Last night Mumbai Indians beat KKR and they lost by 102 runs. And I got the first SMS at midnight saying, "Sir, Mumbai Indians 102 not out." So as a Mumbai Indian supporter, I was rather pleased, but KKR belongs to a dear friend and colleague, Mr. Shah Rukh Khan. I'm sure that they'll do well in the future as well, but all the best. Yes. I would like to invite our writer, Soumya Joshi, he's here. And Jimit Trivedi, जो हमारे कलाकार हैं, फिल्म के बहुत ही पॉपुलर हो चुके हैं अभी. We need 2 chairs. Yeah, it's there. Yeah. अगर आप लोग कुछ पूछना चाहते हैं तो please. I just want to say that Jimit has been exceptional in the film. Of course, there's a lot of praise for the film, and but Jimit has been exceptional. And परिवार में दीपिका, आपके परिवार वालों ने फिल्म देखी तो रणबीर का रिएक्शन क्या था या और सब सदस्यों का क्या रिएक्शन था? बुरा तो बोलेगा नहीं वो मुझे. खैर अभी तो अपने दूसरे घर में रहता है तो बुरा भी बोल सकता है. नहीं, बट सबका काम अच्छा लगा, सबको अच्छी लगी पिक्चर.
मैं एक चीज़ और बोलना चाहता हूँ, आप लोगों ने किसी चीज़ को क्रिटिसाइज़ नहीं किया, लेकिन मैं क्रिटिसाइज़ करना चाहता हूँ इनके सामने एक चीज़ जो मेरी एक ऑब्जर्वेशन है, और इन्होंने मुझसे करवाई थी लेकिन नहीं डाली। देखो दत्तात्रेय भखारिया ही सेज कि हाँ सर, अच्छा बोल दिया, मेरे भी बहुत से सीन्स कट गए, उसके बारे में बात करना चाहूँ। यस, तो वो सीटी मारने के लिए कहा था, बोलना वेल डन, तो मैंने डबिंग, वाइल्ड डबिंग में वेल डन बोला था, लेकिन इसे डाला नहीं पिक्चर में, सिर्फ सीटी डाली उसने। पूछिए क्यों।